Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics Class. So, this is basically problem set 1 on kinetic theory of gas for your class 11 NEET and JEE. Okay. So, just read the problem. Problem 1. The volume occupied by the molecule contained in 4.5 kg water at STP if intermolecular forces vanishes away. So intermolecular forces vanishes है मतलब this is a water vapor है ना, occupied by molecule contained in water. So this is basically water vapor. So this is in gaseous state. So you know basically जो is how much its volume. So you know PV equal to nRT. So n is in mole. So how much mole it is? N equal to 4.5 kg mean 4.5 10 to the power 3 gram over 1 mole H2O. How much? This is 2 and this is 16. 2 plus 16. So total 18. 1 mole water vapor is containing 18 gram. So this is gram and this is gram. Okay. So this is the so it at STP you know at STP 1 mole gas contain 22.4 liter है ना. So 1 mole then 22.4 liter means 1 liter equal to 1000 cc है ना into so 1 liter means 10 to the power minus जो है 100 cc and 1 cc equal to 10 to the power minus 6 meter cube. So in this is in terms of meter cube बोला है ना. So in terms of meter cube करेंगे तो और यहाँ पे जो है आपका so this is ये जो है इसका कितना आएगा 4.5. So 4.5 into 10 to the power 3 over 18 mole. How much it is? By 22.4 into 10 to the power 3. Okay. जो है आपका 10 to the power minus 3 इधर है ना ओवर जो है into 1 मोल के लिए है ना. दिस इज 4.5 into 10 to the power 3 over 18. So this will come near about 5.6 meter cube. Okay, so this is the problem. Okay, you understand. And another approach you can also try. So in volume STP and if there is a not in STP, so you cannot tell 24.5 liters. So in general approach you have to write in such a way PV equal to nRT. So PV equal to nRT. So V equal to n how much? How much n? 4.5 into 10 to the power 3 over 18 n and R you know 8.3 जो है ना and temperature you know temperature 273 and जो है pressure 10 to the power जो है नीचे P आएगा 10 to the power 5 न्यूटन. This is 8.3. So इस तरीके से आप निकल सकते हो है ना. So basically जो है आपका जो है ये दिस इज द कॉमन जनरल अप्रोच है ना. एंड इस तरीके से भी आप केमिस्ट्री में सीखे हो ना. सो इन बोथ वे यू कैन कैलकुलेट इट. नाउ लेट्स अस डिस्कस विद द कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. यू नो पीवी वर्सेस टी एंड दिस यू ऑलरेडी यू नो फ्रॉम योर बेसिक क्लासेस जो है क्लास 11 12 नो बेसिकली सो क्लास अप टू 10 क्लास यू नो अबाउट इट है ना. So let's discuss some plot. Now see the problem set 2. So see this is the graph V versus T. So you from Charles law you know this is for different pressure. So V proportional to T है ना. So for different pressure I have plotted P1 P2. Now from the graph can you say whether P1 equal to P2, P1 greater than P2 or
P1 less than P2. So which will be the correct? कैसे आप कैलकुलेट करोगे? So basic equation you have to always remember PV equal to nRT. Okay. So V equal to nR over P into T. So here this is 1 upon P. है ना? So this is the slope. So here you know this is the 1 upon P, this is the slope of this equation. So which equation slope? This equation, you know, this is having lesser slope and it is higher slope. So lesser slope, so 1 by P is slope of this straight line. So 1 by P, this is lesser means P1 is greater, है ना? This is 1 by P is the slope of this equation. So which graph is basically, कौन सा ग्राफ आपका स्लोप ज्यादा है? इसका ज्यादा है. So P2 का ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है, मतलब कम, ये कम 1 by P कम होना चाहिए, तभी इसका स्लोप. So P2 always less than P1. So P1 greater than P2. So this will be the correct answer. Similarly, you can also calculate P versus V ग्राफ जो है ना, P versus B. So this will be the again parabola, है ना, and again parabola, and this for different temperature T1, T2, T3. So the same graph. So what will be your comment about this temperature, where T1 greater than T2 greater than T3, or ये equal to और ये less than, which one? कौन सा ज्यादा होगा आपको? सो P again from the graph PV equal to nRT. सो T greater than, तो इसका स्लोप भी ज्यादा होगा, है ना. सो T जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो है ये होगा, है ना. सो जितना ही ये जो है वॉल्यूम जो है T टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम बढ़ेगा. सो T3 इज ग्रेटर देन T3 greater than T2 greater than T1, है ना. Problem number 3. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from Earth atmosphere? So Earth atmosphere का कितना टेम्परेचर होगा जब सारे जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल अर्थ छोड़ के भाग जाएगा, है ना. So which planet में there is no existence of any oxygen and atmospheric pressure atmosphere due to less gravitation, and some atmosphere is so much hot that all the molecules are escaping from the that planets, है ना. So हमारे अर्थ के केस में क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर, जैसे यू नो द प्रॉब्लम, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना. एट समवेयर द ऑक्सीजन मोलिक्यूल ऑल विल बी वेनिसेस फ्रॉम अर्थ. कौन सा टेम्परेचर है अर्थ के लिए, है ना. सो आपको कैलकुलेट करना है. So we are too lucky to have this great gravitational force, है ना, so that we are alive and this existing in the earth, है ना. So this is a great creation of our God, है ना. So basically in this calculation we will be learning about different problem from gravitation as well as from kinetic theory. Okay, so you know the basically escape velocity V equal to for earth is 11.2 kilometer per second. Okay, so this is 11,200 meter per second, and this is escape velocity will be equal to basically रूट मीन स्क्वायर, है ना, CRMS, है ना. क्या है आपका 3 kb T बाई m मास ऑफ O2, और बेसिकली जो है मॉलिक्यूलर वेट जब आपका यहाँ पे RT और रूट ओवर ऑफ 3RT ओवर m टोटल मास, है ना. So here it is required kb and mass of single molecule. So basically Avogadro number से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be coming R, and Avogadro number से मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be coming total mass. Okay,
So now, so this will be equal to root of r of 3. Kb is 1.38 into 10 to the power minus 23, 10 to the power minus 23 है ना, एंड टेम्परेचर T ओवर जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल 2.76 into 10 to the power minus 26 kg. ओके, सो T आप कैलकुलेट कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू 11,200 मीटर पर सेकेंड. So temperature will be coming of the order of 8.36 into 10 to the power 4 Kelvin. 10 to the power 4 Kelvin मतलब इतना 836 उसके बाद 00 है ना. So this much Kelvin. So how much मतलब 83,273 ये होगा तो क्या होगा इतना 2,300 मतलब 83,300 टेम्परेचर डिग्री टेम्परेचर. So lots of temperature, then oxygen molecule will be. So इतना टेम्परेचर तो ग्लोबल वार्मिंग से तो बढ़ेगा नहीं. So don't worry about this. Okay, now next problem we will be discussing again from kinetic theory. You know the pressure derivation. Last theory classes I have derived the pressure how much? P equal to 1/3 mn c square, and this mn you will be confusing from your physics books and as well as your chemistry book. So one thing you just write here. So here it is, P equal to pressure equal to 1/3 m in mn c rms square. Okay, and this n is basically the number of molecule over v. This is, so in some book if you can also see the equation PV equal to 1/3 m जो है m कैपिटल N C RMS स्क्वायर है ना. दिस ऑल्सो यू नो. सो बेसिकली जो है आपका, हाँ ठीक है, इस तरीके से भी किताब में देखोगे इधर है ना. सो दिस n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस m इज द mass of single molecule. Okay, so let's start here. So here, so basically we can write 1/3 जो है into जो है 2 ये मल्टीप्लाई करके इधर नीचे V C हाफ m C R M स्क्वायर इंटू जो है नंबर ऑफ n. सो हाफ mn c स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड नंबर टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना. सो दिस इज 2/3 एंड P इक्वल टू 2/3 जो है V PV 2/3 E. So relationship, so PV equal to 2/3 E. So relationship between P and kinetic energy per unit volume. P and kinetic energy per unit volume means V is 1. So P equal to 2/3 E. So this is the famous relationship. And sometimes this question is also coming है ना. So ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4. ओके, रीड द प्रॉब्लम नंबर 5. रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड एफ. गामा इज योर बेसिकली specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. So and relationship F is your degrees of freedom. है ना. ये आपने देखे हैं रिलेशनशिप. तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ इसका गामा का है ना. सो गामा इक्वल टू 1+2/f. दिस इज इक्वेशन यू हैव टू रिमेम्बर है ना. ये इसका जो एस्टेब्लिश हमने लास्ट जो लेक्चर थ्योरी लेक्चर हमने किया है वो थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार है ना. सो
और गामा सॉरी एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू जो है मतलब 2 एफ इक्वल टू गामा -1 एंड एफ इक्वल टू जो है आपका 2 गामा -1। ओके, नाउ अभी जो है आपको जो है 2/f इक्वल टू गामा -1, सो f इक्वल टू 2/गामा। सो बेसिकली दिस इज, so आप now applying this equation you have to calculate gamma using जो है आपका, so now see the problem number 6. okay, see here the value of gamma for hydrogen helium diatomic gas not rigid, है ना, not rigid means there is a vibrational mode. okay, so for hydrogen gas, so this is diatomic molecule, gamma is how much, diatomic molecule इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 डायटोमिक मोलिक्यूल का, है ना। सो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/5 इक्वल टू 7/5 फॉर हीलियम गैस। हीलियम गैस इज दिस इज इनर्ट गैस, सिंगल मोलिक्यूल। सो हीलियम गैस गामा, हीलियम इक्वल टू 1 प्लस 2/3, so this is equal to 5/3. and any diatomic gas, another some list it is X diatomic gas not rigid means there is a vibrational mode. so diatomic molecule का degrees of freedom कितना है 5, और 5 if there is a vibrational mode means not rigid, मतलब ये बॉन्ड रिजिड नहीं, मतलब जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थ्रेड टाइप का अगर बॉन्ड होगा तो कुछ, सो ये स्प्रिंग, ये जो है ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का है ना, उसमें जो नॉट रिजिड। सो दैट इन केस यू हैव टू ऐड वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अदर। सो ये जो है गामा एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2/7, so this is equal to 9/7, so this is 7/5, 5/3. so one type of this type of question obviously will come in your exam every year, है ना। so you just remember this equation, you can solve different so whether it is rigid then +2 will not be there for diatomic gas, if it is not rigid then you have to add +2 degrees of freedom, then you can calculate gamma easily from using this equation. okay, now you know from the equipartition of energy in all degrees of freedom half kT energy, in all degrees of freedom there will be a molecular जो है kinetic energy, it is distributed, है ना। so now see how much degrees of freedom of everything. okay, so here now using equipartition of एनर्जी, है ना, इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है आपको यूज करके नाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 7, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन एंड 4 मोल आर्गन मिक्सचर एज्यूमिंग नो वाइब्रेशनल मोड, है ना। टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, है ना। टोटल इंटरनल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी 2 मोल काइनेटिक एनर्जी। सो आपका जो है 2 मोल 1 मोल के लिए जो है हाफ, so in one, so how much degrees of freedom for oxygen, this is 5. okay, so 5 half kBT in all degrees of freedom for 1 mole, मतलब so 1 एवोगाड्रो नंबर से होगा, so 5 half RT, so into 2 mole means half RT, ये जो है 2 into 5 into half RT, so this is 5 RT is the total kinetic energy for oxygen and for argon mixture. so argon is a monoatomic molecule, so this kinetic, so degrees of freedom is D of degrees of freedom for argon, DOF for argon is how much 3, है ना। so इसका इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपका, जो बेसिकली आपका 3 इंटू हाफ RT, है ना। सो 4 मोल, सो 4 मोल के लिए कितना होगा 3 इंटू हाफ RT, सो दिस इज 6 RT,
So total will be 11 RT इसका internal energy. Okay. Now, so these types of question may be coming in your exam. So if you know the concept, then you can always solve the question easily. Now this is your last question for these lectures, and obviously this 8 question, if you can solve this 8 question, आपको बहुत आसानी से ये आपको किसी भी प्रॉब्लम का आप आंसर दे सकते हो इस चैप्टर से. So 8 question I have chosen for sake of your quick preparedness. Okay. Relationship between mean free path and molecular diameter. This is D is the molecular diameter. This relationship obviously I have established in lecture 1. You see the lecture 1. So mean free path lambda equal to 1 upon 2 root 2 pi n d square. So lambda is always proportional to 1 upon d square when d is the molecular diameter, not radius. Okay. So root 2 pi n, root 2 किस लिए ये किया था when molecular all in moving, इसलिए root 2 correction दिया था उसमें, है ना. Pi and n is the number of molecule per unit volume. So you just remember this. So if some question and different types of question may be coming, है ना. If molecular इसके साथ lambda के साथ कैसे relation, lambda proportional to 1 upon n. If number of molecules is less, then mean free path will be higher. क्योंकि एक container में if there is a less number of molecules, then number of collision will be less. So total जो travel ज़्यादा हो जाएगा. कोई एक दूसरे से कोलिशन करने से पहले, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं है ना, तो घर में बहुत ज्यादा कम मॉलिक्यूल है. सो दिस विल इंटरेक्ट विच अदर एट लार्जर डिस्टेंस. ओके. सो समहाउ आई हैव डिस्कस दिस 8 प्रॉब्लम एंड दिस इज कंप्लीट. सो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट कंप्लीटली एंड प्रिसाइजली सॉल्व 8 to 10 क्वेश्चन एंड यू ऑब्वियसली योर क्विक प्रिपेयरनेस विल बी ओवर. ठीक है, आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए. थैंक यू.